Good morning, students. How are you? Good to hear that you are fine. And what about your studies? Good, if it is running properly. Students, in the last video, we have about degrees. There are 3 degrees of comparison, which we knew in the last video. Today, we will know the formation of comparative and superlative degree from positive degree. आज हम डिस्कस करेंगे कुछ रूल्स जिनमें आपको बताया जाएगा कि किसी भी एडजेक्टिव को पॉजिटिव से कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री में कैसे चेंज किया जाए। लेट्स चेक द रूल्स फर्स्ट। नंबर 1, एडजेक्टिव्स इन पॉजिटिव डिग्री फॉर्म कंपैरेटिव डिग्री बाय एडिंग er और est टू देम। मोस्ट ऑफ द एडजेक्टिव्स में हम er या est ऐड करके उन्हें सुपरलेटिव और कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करते हैं। इफ वी टेक द एग्जांपल ऑफ बोल्ड, बोल्ड इज पॉजिटिव डिग्री। वी विल ऐड er to bold and it will become comparative degree bolder. Then we will add est to bold and it becomes superlative degree boldest. Bold, bolder, boldest. After adding er, it becomes brighter, which is comparative degree. We add est and it becomes brightest, which is superlative degree. Let's see some words following the same rule. Cold, colder, coldest. Clever, cleverer, cleverest. Cool, cooler, coolest. Dark, darker, darkest. Fast, faster and fastest. Some more words: great, greater, greatest. High, higher, highest. Kind, kinder, kindest. Long, longer, longest. Low, lower, lowest. Rule number 2. Adjectives in positive degree which end in e are made comparative and superlative degrees by adding r or st. ऐसे adjectives जो e पे end होते हैं उन्हें हम comparative या superlative बनाने के लिए केवल r या st ऐड करते हैं। केवल r या st ऐड करते हैं। If we take the example able, you may see कि able का ending alphabet है e, तो अगर हमें इसे कंपैरेटिव बनाना है तो हम केवल r ऐड करेंगे, which will be abler. Then we will add st only for making it superlative. That will be ablest. The same is with brave. It ends with b. तो कंपैरेटिव फॉर्म करने के लिए हम r ऐड करेंगे, which will be braver. After that superlative में चेंज करने के लिए हम st ऐड करेंगे and the word will be bravest. Let's see some more examples following the same rule. Simple, simpler, simplest. Fine, finer, finest. Large, larger, largest. Noble, nobler, noblest. Nice, nicer, nicest. तो kids, अब हम मूव करेंगे अपने एक्सरसाइज की तरफ. The question is, fill in the blanks with correct forms of adjectives given in the brackets. आपको कुछ sentences मिलेंगे और सामने adjectives होंगे brackets में. You will have to fill the correct forms. The sentence is number 1. Ooty is dash than Chennai. Here, two places Ooty and Chennai are compared. So, यहाँ हमें comparative degree fill करना होगा. Cold का comparative form क्या होगा? It will be colder. Next is he is dash than me and the adjective is tall. Here also comparison is made between two people. तो यहाँ भी हमें fill करना होगा comparative degree and tall का comparative degree होगा taller. Third is this is the dash table of all. Here one table is compared to all. तो यहाँ hमें superlative degree fill करना होगा. Do you know big का superlative degree क्या होगा? Yes, it is biggest. Next is this is a dash house. As I have already told you कि अगर dash के just बाद noun आता है तो वहाँ हम positive degree fill करते हैं. So here we will fill small.
Next is tortoise is a dash animal. Here also dash के तुरंत बाद noun आया है, तो यहाँ हम positive degree slow fill करेंगे. Next is Greenland is the dash island. A rule I have told you about superlative की दा के जस्ट बाद अगर डैश होता है तो वहां हम सुपरलेटिव डिग्री फिल करते हैं. तो लार्ज का सुपरलेटिव डिग्री लार्जेस्ट यहाँ हम फिल करेंगे. नेक्स्ट इज आमिर इज अ डैश बॉय. आमिर इस सेंटेंस में किसी से भी कंपेयर्ड नहीं है, तो जब कोई भी कंपैरिजन नहीं होता तो हम किस डिग्री का यूज करते हैं? वी यूज पॉजिटिव डिग्री. हियर पॉजिटिव डिग्री इज वाइज. नाउ लेट्स चेक द क्वेश्चन रिसीव्ड फॉर होमवर्क. The question is, complete the table with positive, comparative and superlative degree. And here is the table. Students, यहाँ पे adjectives के तीनों फॉर्म दिए गए हैं, किसी के पॉजिटिव, किसी के कंपैरेटिव एंड किसी के सुपरलेटिव. आपको बचे हुए दोनों डिग्रीज को फिल करना है. Now, after discussing so much about degrees, we are going to wait each other. Solve exercise and be merry. Bye. Thank you.